अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बेकिंग विद रोशोस। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं मेरेंग्स। ये बेसिकली फ्रेंच कुकीज हैं विच आर सुपर इजी टू मेक, वेरी यमी एंड सुपर अडोरेबल। और सबसे अच्छी बात ये कि ये इतनी लाइट होती है कि आप इनको खाते जाएं और बस खाते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट बेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बोल लेना है, मेक श्योर कि वो सुपर क्लीन हो, ठीक है? क्योंकि उस पर कोई ग्रीस नहीं होनी चाहिए। कोई भी ग्रीस अगर होगी तो आपकी मेरेंग को खराब करेगी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, एग वाइट्स और हमारे पास शुगर है। ये शुगर आपने लेनी है जो आपके पास घर में मोटी चीनी होती है, आपने उसको पीस लेना है। जो बाजार से मिलती है पिसी हुई चीनी वो आपने यूज नहीं करनी। जो घर में आपके पास चीनी आपने वो लेनी है, क्योंकि जब हम उसको पीसते हैं तो वो ग्रेनी सी होती है, तो हमें वही ग्रेनी शुगर चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। एग वाइट्स डालनी है आपने बोल में, और यहाँ पे हमारे पास है सॉल्ट और क्रीम ऑफ टार्टर। क्रीम ऑफ टार्टर अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप 2 या 3 ड्रॉप्स लेमन जूस के भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास इस वक्त स्टेज आई है फ्रॉदी, आपको ये वाली स्टेज चाहिए अपनी शुगर डालने के लिए, ठीक है? और शुगर आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, बीटर ऑन रखते हुए। अच्छा, जब आपकी शुगर अच्छे तरीके से अंदर डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर आपने उसमें वनीला एसेंस डालना है। वनीला एसेंस की जगह आप इसमें कोई और एसेंस भी डाल सकते हैं, लाइक लेमन एसेंस है या कोकोनट एसेंस है, दैट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, ठीक है? अब आपने इसको इतना बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स हो जाए। स्टिफ पीक्स आपको मिलेंगी 4 to 5 मिनट्स बीट करने के बाद हाई स्पीड पे। ओके, ये देखिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये कितना थिक है और शाइनी है, ठीक है? और ये देखिए स्टिफ पीक्स हैं। एग्जैक्टली ये स्टेज हमें चाहिए। दिस इज द परफेक्ट स्टेज फॉर मेरेंग। अच्छा जी, अब मेरेंग इज रेडी, ठीक है? अब हम इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक में हम ब्लू कलर ऐड करेंगे, एक में हम पिंक कलर ऐड करेंगे, ठीक है? आई हैव विल्टन ब्लू कलर विथ मी एंड विल्टन पिंक कलर। बिल्कुल आपने इसमें थोड़ी सी अमाउंट ऐड करनी है, क्योंकि मेरेंग्स लुक वेरी प्रिटी इन पेस्टल कलर्स, तो अगर लाइट कलर्स होंगे तो वही अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब हम इस बैटर को पुट करेंगे अपने पाइपिंग बैग में।
इस तरह से। Okay, meringues are ready to bite now. अच्छा, आपने पार्चमेंट पेपर के नीचे थोड़ा थोड़ा सा बैटर लगा लेना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इसमें आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। देयर आर अनलिमिटेड ऑप्शंस। इसी तरह से ब्लू को भी पाइप कर लेते हैं। Okay, these are all ready and ready to go in the oven. ओवन का टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस रखना है। डिग्री सेल्सियस आपने इसका टेम्परेचर रखना है और इसको 1 आवर के लिए आपने बेक करना है। जब ये 1 आवर इसका गुजर जाएगा तो ये रेडी हो जाएंगे, तो आपने इनको निकालना नहीं है और इसको मजीद 1 घंटे के लिए ओवन के अंदर ही रेस्ट देना है, ठीक है। तो जब ये 2 आवर्स गुजर जाएंगे तो हम आपके पास वापस आएंगे रेडी मेरिंग्स के साथ। 1 आवर हमारे मेरिंग्स ने कुक होने में दिया है और बाकी 1 आवर हमने इसको रेस्ट दिया है। ये हमारी मेरिंग्स रेडी है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।